all the related word. Even by using first three words also, he is starting to find out the word. The same concept it is used here. This is the block diagram of associative memory. We are using argument register and key register. So associative memory, array and logic. So obviously we need the logic also. That memory, it is saved here. We are using a logic, and by using the logic on argument register and on key register, that word it is located. We are giving input and the memory either it is read or write. Match register, whatever data you are giving, that input you are giving, whether it is matching or not, that can be identified by using the match register. So this part, argument register and key register, it is important. See this, if I am giving you this word, 101 11100. Actually, I want to search out this word. Okay, if I want to search out this word, so this is nothing but here. We are having this different parts. Argument register, it contains the word to be searched. So I want to search this word. So this is nothing but your argument register. Now what is key register? This specifies which part of the argument word needs to be compared with the words in memory. If all bits in register are 1, the entire word should be compared, else only bits having 1 will be compared. Try to understand this part. Actually, this is just for masking or unmasking, we will say. Now, this word I want to search. This word I want to search. And key, this is nothing but your key register. So what key register says, if throughout the key register, if this is 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 and 1, it means that I have to match each and every word in the given argument. Okay, so if some of there are zeros, like in this word particularly 1, 1, 1, and all are the 0, 0, zeros, so what is expected while I am searching, I should search this first. This is must, because 1, 1, 1 is there and remaining all are 0. Doesn't matter whatever the words here, I am not interested in that, but strictly I want here 101, because here this word is 111. I will repeat. In argument, if you are writing some number 1 1 1 1 0 0 1 1, okay, and in key register, while I am writing this key register, I am writing 0 1 1, then 1 1 0 0 0. So wherever I am writing 1, these letters are must. This I want to search. Okay, it doesn't matter whether it is 1 or 0. Whenever in key register this 0 comes, whenever in key register this 0 comes, we are not forcing for this particular words. But whenever in key register this 1 is coming here, strictly I want this words. So this is actually data saved in associative memory. This is the data saved in associative memory. For the current example, as 111 is there, below this 101. So strictly what I want, 101. Let us check. पहले हम ये 101 check करेंगे. So 101, no, it is not matching. This is also not matching. Yes, here it is matching. Here also not matching. Okay, and that's why word 1. So here, for this word 101,000, it shows me matching. Here if you are observing 100, if it is giving me 100 in the memory, sorry, word 100, if you are observing 100, no, that one it is not coming. One it is not coming. So it is not matching with. Ek minute, huh? I will just rub this. Okay, so some word it is given. I will write down one more word. Third word if I am writing. And some other words are there. 10001. Can you tell me what will be the output in the match register? Is it match? Okay, match register. If matching, gives you the output 0. If not matching, gives you the output 1. So can you tell me what is the output here? Whether it is 1 or 0? 0, I guess. Yes, it is equals to 0. Why 0? Because see, if 111 it is written here, so strictly I want 101. Doesn't matter whatever the number here. But if I am writing this third word, it is giving me 011.
It gives me 0, 1, 1, which is not saved in this associative memory. So that's why it gives me the output as 0. Okay, if I'm writing one more word, 101 and 11000, what will be the output? 1. Output, it will be the 1. So try to understand, this is your argument, which word you have to find out, and this is just like masking in key register. Wherever k it is 1, it is written, wherever 1 it is written, that numbers are must. If you are observing that present here, then it shows you the matching. 0 0 है तो no need to check this, but जहाँ पे 1 1 1 आ रहा है वहाँ पे आपको compulsory check करना है. So that should be matched with the associative memory. So by using such a concept, actually the words can be identified. What are the uses? See, अब Google search में आप एक word डालते हो तो उसको match करने वाले. By using that one keyword, whatever the matching result, it gives you all the matching result. And the searching process, it is hardly in fraction of second. So this process, it is very fast, suitable for parallel search, but it is costly as compared to okay. So आप इसका use कहाँ पे करने वाले हो? Where you that neural network we are using for pattern recognition, face recognition. So face का image आपको दिया जा रहा है, which is already saved in the what the pictures you are. So retrieving that image. Okay, so many times we need that as an output. So associative memory help to retrieve that image. So there actually of associative memory. One is associative and second is hetero-associative. So what is there in auto-association? Just you can observe. This is the saved one. A, image is saved. But what input you are giving, some of the part it is missing. Some of the part it is missing or it is damaged. Even see, for one image, this one side it is missing. This you are giving as the input. So associative memory, by adding this side, gives you this as the final output. This is just because of the associative memory. So some of the part it is missing, but associative memory gives you that A. It is retrieving the original image. What about the hetero association? There are two types actually. In hetero association, hetero different. So Tehran. One city name, we know that it is giving you city name. Another example, let me give you, like app square, some of the part it is missing. For what you are using actually, कि आपका कोई part missing आ रहा है, damage है, mistake हो गया है, images में blur हो गए हैं. So in that case, you are using the concept of associative memory. Now, this part you are giving, and if you are getting the output as this one. Okay, so this is in hetero actually. City name है Tehran, अलग-अलग नाम आपको मिल रहे हैं that are under the city name. So it gives me input and outputs are different here. यहाँ पे जो input आ रहा है and output आ रहा है वो different आ रहा है. But what is this? This is category. What we can say? This is category. Tehran city के under आता है. One more example, if you are giving one image, आपको आइडेंटिफाई करना है वट एवर द इमेज ऑफ एक स्पैरो कंसिडर कर लो, आप इमेज जो प्रोवाइड कर रहे हो स्पैरो का इमेज प्रोवाइड कर रहे हो, एंड देयर आर सम डैमेज इन दैट इमेज पर्टिकुलरली, एंड यू वांट टू रिट्राइव व्हाट इमेज इज दिस. सो व्हाट इमेज यू विल गेट? दैट पिक्चर ऑफ स्पैरो इटसेल्फ. बट हेट्रो में क्या आ जाएगा? इफ यू आर डिवाइडिंग दैट आउटपुट, यू आर जस्ट गिविंग एज बर्ड ओनली. Okay, if you want output as a bird only, what category is this? Bird का ही image आ रहा है, but you are trying to find out what is the category. जहाँ पे output मेरा कुछ अलग है, ना कि मुझे वही bird का image चाहिए, sparrow का ही image नहीं चाहिए मुझे. I want to identify category of particularly of that sparrow. So it is not animal, this is bird. So sparrow, you are giving input as a image of sparrow which is something damaged, and it gives you category of that sparrow which is nothing but a bird. Okay, so auto association and hetero association. So while we will see the problems, try to understand input and output are same here, and here input and output are different. Okay, so this is the concept of associative memory, how you are applying it at the time of problems. So let us see.
पहले हम कंप्लीट करेंगे एटो एसोसिएटिव मेमोरी. So what is the algorithm? Two methods you can use, either this one or this. You are initializing the weights to 0, then you are finding the new weights by adjustment by using this formula. So here one by one you need to find out every weight, W1, W2, W3 and so on. Imagine karo you are having 3 inputs, 2 outputs. If you are considering like this, it gives you total, if you are observing this, it gives you total 6 weights. ठीक है, बट ये 6 वेट हमें अपडेटेड फाइंड आउट करने हैं क्या? नो. सो लेट अस फाइंड आउट अ वेट मैट्रिक्स. उसकी जगह पे हम ये वेट मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं. दिस इज ऑप्शनल टू दिस वन. So we are finding weight matrix. Weight matrix of what? Some input it is given to you. Whatever the input it is given to you, 0, 1, 0, 0. Such input it is given to you. So you are considering the input. What output you are expecting in associative? आपको output भी तो यही चाहिए, 0, 1, 0, 0. So input and output are same here. बर्ड का इमेज दे रहे हो विच इज डैमेज्ड वन एंड यू वांट द इमेज ऑफ बर्ड ओनली. तो पहले हमें ट्रेन करना पड़ता है. हाउ वी आर ट्रेनिंग? सो दैट अब इसमें कुछ मिसिंग डेटा हो रहा है, कुछ मिस्टेक हो रहा है, देन ऑल्सो यू विल गेट द सिमिलर रिजल्ट. लेट मी एक्सप्लेन यू द एग्जांपल ऑल्सो. फिर से हम कंसेप्ट पे आ जाएंगे. We are finding the weight matrix first of all. Summation of S transpose into SI we are taking. Then we are calculating the net input. Net input जो हम हमेशा कॉल करते थे summation function. Summation function WI XI. If you remember WI XI summation function. Generally I was using a notation I. I का हम notation use करते थे. Then whatever the result you are getting, you are applying activation function on this. While you are applying the activation function, just remember this we are using whenever your coordinates are in bipolar form. Okay, bipolar form, that is in terms of 1 and -1. अगर आपके coordinates आ रहे हैं 1 and 0 के फॉर्म में, if your coordinates are in terms of 1 and 0, तो बस ये skip कर दो. What will be the activation function? 1 if z greater than 0 and -1 if z less than 0. बाइपोलर के लिए ये वाला एक्टिवेशन फंक्शन, और अगर बाइनरी कंसीडर कर रहे हो तो आप सिर्फ ये वाला मिडिल टर्म छोड़ रहे हो. ठीक है, लेट अस सी सिंपल एग्जांपल. The question: train the auto associative network for input vector. Input vector S it is given to you, and also test the network for same input vector. Test the auto associative network with one missing, one mistake, two missing, two mistakes. So how many problems are there? First one is train the auto associative network for the given input, and also test the network for the same input vector. Second question. Third, fourth, fifth, and sixth. Total 6 small part we have to find out. See the method of solution. We are finding the weight matrix first of all. How we are finding the weight matrix? S transpose. Just to make find out product of this, we are trying to match their orders. So S transpose you are taking. This is nothing but your S. So transpose of S into S. If you find out product of this, if you are finding product of this, see this, a simple product. First row, first column. -1, -1. Second row, second column. Third row, third column. So likewise, I am getting this matrix. Okay, here you are getting this matrix. Sorry, first row, first column, first row, second column. Likewise, you will get this first row, and then 1 into all gives you the second row, and likewise the remaining rows you are getting. So this is the weight matrix. Okay, we are calling it as the weight matrix. This is nothing but weight matrix. Now, once you find out the weight matrix, see the question. This is your first question. Test the network for the same input vector. What it means? याचा अर्थ काय असतो? If you are giving this vector as an input, if you are giving this vector as an input, are you getting same vector as an output? Because this is in auto associative memory. तो जो आपका इनपुट आप दे रहे हो ना, अब यहाँ पे तो कुछ डैमेज है ही नहीं. Whatever you are giving, you should get the same output. तुम्ही हे इनपुट देताय तर तुम्हाला आउटपुट ही तेच मिळायला पाहिजे. So let us try to understand this. So what we are finding first?
summation function. I, it is equals to wi xi. What is xi? The same vector. So same vector you are considering. What is w? The weight matrix. आप weight matrix consider कर रहे हो, ठीक है? अब product, if you are considering the products, first row, first column. So it is -1 into 1 minus 1, 1 into -1 minus 1, minus 1, minus 1. So this gives me 4. Now first row, second column. So it gives me -1, minus minus plus 1, 1, 1, and similarly other numbers 1. So 4. And same rows and columns, so I am getting 4 and 4. What is this? This is nothing but I. Okay, if you remember, now you are applying activation function. Y, it is equals to phi of I. Y, it is equals to phi of I. Where you are applying this? You are applying this activation function on -4, 4, 4, 4. You are applying it here. What activation function you are applying? Y, it is equals to 1. If I is greater than 0, it is 0. If I equals to 0, it is -1. If I, it is less than 0. Okay, so if I am applying this activation function to get the final output y, phi of -4 by using this -1, phi of 4, 1, again phi of 4, 1, and phi of 4, 1. See this, what you inserted, what was the input? Input, it was -1, 1, 1, 1. What was the output? Output, it is also same. So जो आपने input दिया है वही आपको output में मिला है. What are the image of bird you are giving? You are getting the output as the image of bird only. Okay, so this is in auto-associative memory. But first we have considered no mistake is there, no missing value is there. आपण पहिला वाला जो input घेतलेला आहे, no mistake, no missing value. Now let us try to train the network with one missing entry. Missing entries. Missing entries. How you are showing the missing entries? We are showing the missing entries by 0. And if some mistakes we want to show, की तुम्ही जे मिस्टेक दिलेल्या इनपुट साठी काही मिस्टेक करताय, so how you are showing? By -1. I will repeat. Now see, this is the given trained vector. I will say आपण ट्रेन कशासाठी केलेला आहे? For what input we are training? For this input, -1. This is our original input. -1, 1, 1, 1. This is our original input. But by mistake, what happened now? Next time when I am using this, I am making one small mistake. Now this is saved in autosave memory. So now I am making a mistake. First वाला जो element है उसको हम 0 लिख रहे हैं. We are writing this as 0. This is my mistake actually. Now I am trying to understand whether associative memory, is it capable of retrieving this? So when we can say it is capable if I am getting output as this one. Okay, so let us try this. Find out I it is equals to x into w. So what is x now? X, it is equals to 0, 1, 1, 1. Okay, what is the matrix? It is equals to 1, -1, -1, -1. -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, and -1, 1, 1, 1. Okay, now let us try to find out product of this. If you are finding product of this, this is equals to first row, first column. This is equals to 0 into 1, 0, 1 into -1, 1 into -1, 1 into -1. So it gives me -3. Second element, first row, the second column. So it gives me 0 into all other elements. So it gives me 3, again 3 and 3. Am I correct? Yes, ma'am. Okay. So what is this? This is nothing but summation function I. Now what I want to find out? मुझे अभी output find out करना है y. How I am finding this? By applying the activation function. If I am applying the activation function, check this. What you will get? -3. If you are applying the activation function, I, it is equals to less than 0. So what will be the output? -1. Now +3. I, it is greater than 0. So this is 1. And similarly for remaining two values also. So see, what was my input? 0, 1, 1, 1. But
Auto-associative. This network is capable of retrieving the original input because it is trained. Whatever weight matrix is there. आता तुमच्या लक्षात येत असेल आपण वेट ऍडजस्ट करतोय. ह्या वेट ऍडजस्ट करून मिळालेली व्हॅल्यू आहे. दिस इज द ऍडजस्टेड वेट. आय एम ट्रेनिंग माय डेटा टू ऍडजस्ट द वेट अँड दिस इज द वेट मॅट्रिक्स. And now, if I am making some mistake, then also the network it is capable of retrieving the original data. Even though there is a mistake 0 input when I am giving, it is with one of the mistake. But as data it is trained already with this weight matrix. हे जे काही weight आपण इकडे consider केलेले आहेत ना, ते trained data साठी आहे. So data that weights are set. Okay, so associative memory it is capable of retrieving the data if any such mistake is there. Clear to all? All are attentive? Yes, ma'am. Can you please repeat the last statement? Which one? ये वाला? हाँ ma'am. Okay, let us do one thing. We will take with 2 mistake. हम ना 2 mistake के साथ अभी try करते हैं. Maybe see what autosave memory says. A piece of आपका जो कुछ भी डेटा है, like here we are considering a complete set, simple set जिसमें सिर्फ 4 values है. So piece of values means maybe 2 mistake, 3 mistake भी हो सकते हैं. उसके साथ 2 मिसिंग वैल्यू, 3 मिसिंग वैल्यू भी हो सकते हैं. सो व्हाट आई एम सेइंग, हमारा जो ओरिजिनल डेटा है x क्या है, दिस इज -1 1 1 1. ओके, दिस इज द ओरिजिनल डेटा. बट व्हेन आई एम कंसीडरिंग द डेटा वन मोर टाइम, आई एम मेकिंग सम मिस्टेक. कुछ मिसिंग हो रहा है या कुछ मिस्टेक हो रही है. लेट मी कंसिडर, मुझसे 2 वैल्यूज मिस हो गई है. यू कैन कंसिडर एनी सीक्वेंस. इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एज -1 0 0 and if I am considering 1, 2 मिसिंग वैल्यूज है मेरे पास. ओके, 2 एंट्रीज मुझसे मिस हो गई है. ओके, ट्राई टू इमेजिन वन इमेज में कभी कभी क्या होता है, फोटो अगर बहुत पुराना हो गया तो वो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, तो वो पार्ट मिस ही हो गया, ऐसा इमेजिन करो. बट आई वांट टू रिट्राइव दैट. ठीक है, जो कि इमेज मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है, विच वाज ऑलरेडी ट्रेंड, एंड नाउ आफ्टर दैट इट वाज missing, some of the part it is missing. So autosave memory it is capable of retrieving that image again. So that we are just trying to understand. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मिस्टेक्स मैं कंसिडर कर रही हूँ. आप कहीं पे भी मिस्टेक कंसिडर करो. दिस इज अवर ओरिजिनल डेटा. ये -1 1 1 ये मेरा ओरिजिनल डेटा है. 2 मिसिंग वैल्यूज मुझे कंसिडर करने हैं, तो मैंने ये 2 मिसिंग वैल्यूज यहाँ कंसिडर कर लिए. ठीक है, नाउ अगेन आई विल कंसिडर. सबसे पहले हेब्स रूल. Try to remember the Hebs rule. What we are doing, आप क्या कर रहे हो ना, बस यहाँ पे WI/XI फाइंड आउट कर रहे हो. ठीक है, WI/XI फाइंड आउट कर रहे हो. So this is nothing but your XI. और WI ये पूरा वेट मैट्रिक्स है which is for trained data. So we will consider this 1 -1 -1 -1 -1 1 sorry -1 1 1 1. ये -1 1 1 1 and -1 1 1 1. Okay. If I am considering this, can you tell me the product? आप इसको I बोलो, WI/XI बोलो. This is summation function. ठीक है, so can you tell me this? What is this? Is it 0? Or -2? Ma'am, -2 2 2 2. Yes, I am getting this -2 2 2 2. ये क्या मिला है आपको, समेशन फंक्शन. ट्राई टू रिकॉल. सबसे पहले हम WI/XI फाइंड आउट करते हैं. अब हम मुझे क्या चाहिए, आउटपुट. एक्चुअली आप न्यूरल नेटवर्क लगा रहे हो. ये आपको इनपुट दिए गए हैं, आपको वेट फंक्शन भी दिया गया है. दिस इज द वेट फंक्शन एक्चुअली. ओके, दिस इज द वेट फंक्शन. ठीक है, ये वेट फंक्शन आ गया है. अब इस वेट फंक्शन के साथ, वेट मैट्रिक्स के साथ आपको I फाइंड आउट करना है, समेशन फंक्शन I. तो वो क्या होता है, WI/XI. तो इसलिए मैं ये फाइंड आउट कर रही हूँ, XI/WI. सॉरी, दिस इज I. XI/WI. जो WI आप अलग अलग लेते हो, ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको मिल रहे हैं. तो ये पूरा आपको मैट्रिक्स मिल गया. सो आफ्टर फाइंडिंग समेशन फंक्शन I, अब हम आउटपुट निकालेंगे. आउटपुट आप कैसे निकालते हो, बाय अप्लाइंग द एक्टिवेशन फंक्शन. Y it is equals to phi of I.
y it is equals to phi of I. So मैंने एक्टिवेशन फंक्शन भी डिफाइन कर लिया यहाँ पे, ये मेरा एक्टिवेशन फंक्शन है. आप कहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन लगा रहे हो? फॉर -2, 2, 2 and 2. If I am applying that activation function, -2 के लिए अगर मैं लगाऊं, I का वैल्यू अगर -2 आता है, that is negative, the output it will be -1. 2 आ गया, that is I greater than 0, so output it will be +1. 2 again, so output 1 and 1. See, from where I have started, मैंने इनपुट क्या दिया? -1 0 0, जिसमें मेरे दो वैल्यूज रॉन्ग हो गए थे, सॉरी मिस हो गए थे. ओके, 2 values was missing, but just because of auto-associative memory, as this is the matrix corresponding to the trained input, जो हमारा इनपुट था उसके लिए हमने ट्रेन करके ये वेट मैट्रिक्स निकाला है. सो दिस इज कैपेबल ऑफ रिट्राइविंग द डेटा, दिस इज कैपेबल ऑफ रिट्राइविंग द डेटा. ठीक है. सो आगे वाला जो कंसेप्ट रहेगा हमारा हाफ फिल्ड नेटवर्क, इन दैट वी आर यूजिंग रिकरेंट नेटवर्क. इफ यू रिमेंबर, हमने रिकरेंट नेटवर्क पढ़ा था जिसमें मैंने क्या बोला था? द आउटपुट इटसेल्फ इनपुट फॉर द नेटवर्क. वो आगे हम कंसेप्ट देखेंगे. सो फॉर दैट वी नीड दिस कंसेप्ट कि some of the data it is missing, some of the data it is mistake. So for that we are trying to retrieve the original data. See, if missing की जगह पे अगर हमने mistake consider कर लिया, mistake मतलब what? -1 1 1 1, this was the original data. ये है हमारा ओरिजिनल डेटा. अब हमने एक मिस्टेक कर दी है, देखो -1 -1 and -1, 2 मिस्टेक. ओके, अगर हम दो मिस्टेक्स कंसिडर करते हैं, लेट अस ट्राई विथ 1 मिस्टेक. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम एक मिस्टेक के साथ चेक करते हैं कि ये 1 की जगह पे इंस्टेड ऑफ 1 आई एम कंसिडरिंग इट एज -1. मिस्टेक हो गई. I will repeat, mistake shown by -1 and missing values are shown by 0. So -1 -1 1 and 1. Let us try whether data it is retrievable. So what was the weight matrix? Weight matrix it is 1 -1 -1 -1. Then this is -1 -1 -1 and all are 1 1 1. Can you do this? Everyone, please try for this example. You are finding first I it is equals to Wi xi, and then you are finding y it is equals to phi of I. So just take this product, whatever the product you will get, just apply activation function on this and tell me what is the y here. I will wait for you. Yes, please, can you tell me what is the value of I? -2 2 2 2. Okay. I think it's correct. -2 2 2 2. This is value of I. So from this, what is the value of y? Y is 1 0 -1. If I greater than 0, I equals to 0, I less than 0. -1 1 1 1. Okay, see from where you have started. We are making one of the mistake. The actual data is this one, but we are making one mistake. But still, because of the trained weight matrix, it is capable of retrieving the original data because this matrix it was trained. Is it clear to all? सगळ्यांना clear झालंय का हा part? Yes, ma'am. Okay, so I am just giving you one simple example before going to hetero one. So let us take one simple example. I am giving you one input. S it is equals to 1 1
-1, -1. Okay, what I'm expecting, train the given network for auto associative for one missing, only for one missing value. Okay, so let me just revise the steps. What steps you will follow here? First, you are finding the weight matrix. Tell me how you can find out that weight matrix. सबसे पहले आपको वेट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है. व्हाट इज दिस? समेशन ऑफ एस ट्रांसपोज इनटू एस. वेट मैट्रिक्स वी आर फाइंडिंग विच इज इक्वल्स टू 1 1 -1 -1. Okay, into s 1 1 -1 -1. Find out the weight matrix first of all, and then one missing value. So this is your original vector. So consider any one of the element as 0 and check, are you getting the same input or a different value is there? Okay, so everyone please find out the weight matrix first of all, then again we'll discuss the next steps. Yes, what is the weight matrix? Yes, please. What is the first row? झालं कॅल्क्युलेट करून सगळ्यांचा? One one -1. Yes. 1 1 -1 -1 -1 -1 +1 +1. Same. Yes. Recall it. तुमच्या लक्षात कोणाच्या गेलेलं असेल तर एक वेळ रिकॉल करून घ्या प्लीज. Now this is the weight matrix. Now what I said, just check it. If one of the value it is missing, are you getting the same output? One of the value it is missing. So any one of the element consider it as 0. Okay? Any one of the element you can consider it as 0. I think आपण 3 missing केलेलं नाहीये. चला 3 missing try करूया आपण. If I am assuming 3 of the values are missing, any 3 elements you can make at 0. So 1 0 0 0. Try this. With this input, are you getting the same output? म्हणजे तुम्हाला हेच आउटपुट मिळत आहे का? Because this is the trained matrix now. This is the trained matrix. So this should give you the similar. And see, we are saying piece of, and it is capable. So not every time you will get the desired output. 1 0 0 0. What you will find out? पहले I find out करा. This is nothing but your x. This is nothing but your w. Find out I equals to x into w. And then find out y it is equals to phi of I. Ma'am, I comes out as 1 1 -1 -1. Direct I का वैल्यू आ रहा है 1 1 1 -1 -1. ओके, अगर हम एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे, यू आर अप्लाइंग द सेम एक्टिवेशन फंक्शन. As this is positive 1, output is 1. As this is positive 1, output 1 is. This is -1, so this is negative, and this is -1, so this is also negative. So what you are getting? What was the input you are giving? 1 0 0 0. What output you are getting? 1 1 -1 -1. What is the initial input we are giving to train the weight matrix? See this, ये और ये आपको सेम आ रहा है.
even though you are making 3 values are missing, जो ओरिजिनल डेटा है उससे उसमें हमारी 3 वैल्यूज मिस हो गई थी, then also as an output you are getting the correct data, and that is the power of auto-associative memory. This is capable of retrieving the data if piece of the data it is missing. Okay, अगर आपके दिए गए इनपुट का कुछ डेटा अगर मिसिंग है, then auto-associative memory it is capable of retrieving that particular data. ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है. दिस इज द क्वेश्चन. कुछ आपको इनपुट दिया गया है एंड द क्वेश्चन इट इज, पहले तो आपको वेट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है एंड देन फॉर द गिवन क्वेश्चन वेदर इट इज फॉर 1 मिसिंग, 1 मिस्टेक, 2 मिसिंग, ट्रेन द गिवन नेटवर्क फॉर ऑल सच ऑफ इनपुट्स. ओके, दिस इज फॉर ऑटो एसोसिएटिव. ऑटो एसोसिएटिव में हमने क्या कंसीडर किया, जो इमेज मैं दे रही हूँ एज एन इनपुट, आई वांट सेम इमेज एज एन आउटपुट ऑल्सो. ए का कुछ पार्ट मिसिंग था, हमें फाइनली ए ही चाहिए था, बट वो पार्ट पूरा कंप्लीट होके मुझे मिलना चाहिए था. ओके, सो इनपुट एंड आउटपुट वाज सेम. नाउ इन हेटेरो व्हाट हैपन, इन हेटेरो दैट इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर डिफरेंट. ठीक है, इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर डिफरेंट. सी, हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी इज कैपेबल ऑफ रिट्रीविंग अ पीस ऑफ डेटा ऑफ वन कैटेगरी अपॉन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा from another category. तो यहाँ पे क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट्स आर ऑफ सिमिलर टाइप वी कैन से, बट उसकी ही एक अलग कैटेगरी रहेगी. लाइक इन व्हीकल्स, different types of vehicles may be there, so it will able to find out type of vehicle. जैसे कि मैंने बर्ड्स के लिए बोला, different birds will be there, so bird it will be the main category. So here bird it is the main category, और bird के यहाँ पे जो input आ रहा है अलग अलग, parrot a bird, some other, if I am giving peacock this is a bird likewise. okay, तो यहाँ पे input और output क्या होगा आपका, अलग अलग होगा. So again almost similar rule we are going to use. अब ये सारा तो हम प्रोसेस नहीं करेंगे because single weight evaluation it is difficult. So we are finding this. okay, we are finding this. फिर से हम W फाइंड आउट करेंगे. W इट इज इक्वल्स टू, अब पहले वाला फॉर्मूला क्या था, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, S ट्रांसपोज इनटू S, बिकॉज इनपुट एंड आउटपुट बोथ वाज सेम. बट यहाँ पे क्या आ रहा है, इनपुट एंड आउटपुट आर डिफरेंट. इनपुट एंड आउटपुट क्या है, डिफरेंट है. ट्रांसपोज ऑफ इनपुट इनटू T. इफ यू आर ऑब्जर्विंग, सी दिस, अगर आप कंसिडर कर रहे हो कि 4 इनपुट्स आ रहे हैं, ठीक है, 4 इनपुट्स आ रहे हैं एंड देयर आर 2 आउटपुट्स. If 4 inputs are there and if there are total 2 outputs, if you consider like this, so 1 2 3 4 5 6 7 8, total 8 will be there. हमें कितने weights find out करने हैं, 8 weights find out करने हैं. And associated to first input there will be 2 weights, second 2 weights and so on. So अगर यहाँ पे प्रोसेस तो सेम रहेगा, ऑलमोस्ट द प्रोसेस इट विल बी सेम, ओनली सी दिस, फर्स्ट सेट ऑफ इनपुट्स, सेकंड सेट ऑफ इनपुट्स, थर्ड सेट ऑफ इनपुट्स एंड फोर्थ सेट ऑफ इनपुट्स. सो S1 S2 S3 S4 they are just like X1 X2 X3 X4. okay, and ये T1 T2 क्या है, they are nothing but our final outputs Y1 and Y2. okay, we are familiar with the notation, so I will just write down this notations here. और ये सेट है अलग अलग, जैसे कि एंड गेट में होता था 1 -1 -1 1 1 1, उस तरीके से हमें यहाँ पे 4 सेट्स दिए हैं. ओके, एंड देयर आउटपुट्स आर लाइक दिस. व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, एडजस्टिंग द वेट. सबसे पहले हमें वेट एडजस्ट करने हैं कि व्हाट विल बी, बाय अप्लाइंग द ट्रेनिंग यू आर फाइंडिंग दैट वेट मैट्रिक्स. आप सबसे पहले वेट मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, नाउ हाउ मेनी वेट शुड बी देयर, टोटल 8 weights will be there, total 8 will be there. 2 for first set, see first input X1 as I have shown you, first input 2 weights, second input 2 weights and so on. So first input 2 weights, second input 2 weights, and likewise I want total 8 weights here. ठीक है, this matrix I want. Now let us consider the first set. This is first set. 1 -1 -1 -1, sorry,
दिस इज फर्स्ट सेट ऑफ इनपुट और ये क्या हो गया उसका आउटपुट. दिस इज नथिंग बट आउटपुट. So 1 minus 1 minus 1 minus 1 and the output it is minus 1 1. First I am finding that weight corresponding to first input. So W1 it is equals to S transpose of this into output T. If you remember xi yi, W new it is equals to W old minus xi yi. Such formula we are using. So वही आप कर रहे हो xi into yi. So by applying this, I will get this as the output. I am getting this output here. Okay, ये मुझे output मिल गया है. Now this is the weights corresponding to first set. उसी वे में हम second set भी consider करेंगे. 1 1 minus 1 1 1 minus 1 minus 1 and outputs are minus 1 1. Second set consider कर लिया हमने. So for this set, if you consider this set, अब इसके लिए ये वाला मैट्रिक्स आ गया. In similar way, we can consider the third and fourth set of input and output, जिसके लिए हम weights find out कर रहे हैं. ठीक है. And finally, जो weight matrix हमें क्या पता है? We are taking summation of wi xi. Okay, we are taking summation of wi xi. Summation of wi xi means w1 x1 plus w2 x2 plus w3 x3 and w4 plus w4 x4. Okay, we are finding addition of all this. So ये w1 x1 w2 x2 w3 x3 and w4 x4. So such sets we are having. तो इसका addition आप कर लोगे. So here you will get the required weight matrix. Weight matrix मिल गया. Now this is the weight matrix. Now, what is my question? With missing data entries, check it. अगर आप कोई भी एक missing entry consider करते हो, so whether I am getting the desired output. Okay, तो ये ना पीछे जाके देखना पड़ेगा. Let me just remember this. Let us consider any one of the input set. If you consider first one set, अगर आप first वाला set consider करते हो 1 minus 1 minus 1 and minus 1. देखो पहला वाला है 1 minus 1 minus 1 minus 1. What I am considering one of the missing value. एक value missing कर देते हैं. So एक value missing करनी है. I will consider second value it is missing minus 1 minus 1. Now we are having that W it is equals to minus 4 4 minus 2 2 2 minus 2 and 4 minus 4. Okay, this is the weight matrix. तो अभी हमें चेक क्या करना है? Let me tell you what we are checking. This is the input actually. इसमें मैंने क्या कर दिया? One of the value it is missing. One value it is missing. So I want to check even the value it is missing whether I am getting the same output. मुझे minus 1 1 ही मिलेगा या कुछ और आउटपुट मिलेगा. That I need to check. So फिर से स्टेप क्या रहेगा? Find out I it is equals to x into w. Okay, x into w हमें find out करना है. So let us try this. So to find out x into w, x into w. So x it is equals to 1 0 minus 1 minus 1 into w. तो ये w है minus 4 4 minus 2 2 2 minus 2 4 minus 4. If we are finding product of this, if you are finding product of this, can you tell me what is the product? First row, first column. First row, first column. So 1 into minus 4. Minus 4, this is 0, then minus 2 and minus 4. So can you tell me what is the final product, final value? काय येते value? लक्ष द्या प्लीज सगळेजण. Yes, ma'am. Yes, please. Can you please? Yes, what is the value? काय येते? Minus 4, then 0, then minus 2, and then minus 4. Am I correct? बरोबर है ना? Yes, ma'am.
yes, it's minus 10. ठीक है. Now let us check the second one. Second one के लिए क्या मिलेगा? 4, then 0, then minus 1 into 2 gives me plus 2, then minus 1 into minus 4 gives me plus 4. तो ये मिलेगा मुझे 10. ठीक है. Minus 10, 10. What is this? This is summation. This is summation I. This is summation I. But I want output. तो output हम क्या करते हैं? Activation function. I want C. Targeted output क्या है? -1, 1. If you remember, activation function. What is the role of activation function? Convert the output in readable form. मुझे ये output readable form में चाहिए, and that's why I am applying activation function. वो भी कौन सा activation function लगा रहे हैं? I am not applying sigmod I. क्योंकि मुझे जो आउटपुट चाहिए दैट शुड बी आइदर 1 और -1 इस फॉर्म में चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग द सेम एक्टिवेशन फंक्शन 1 0 -1. इफ i ग्रेटर देन 0, i इक्वल्स टू 0 और i लेस देन 0. तो अभी अगर आप ऑब्जर्व करो तो दिस -10, so I will get the output as -1. For this 10, I am getting the output as +1. So what is the output? -1 +1. This is the original one, but I am making one mistake. एक मैंने मिसिंग वैल्यू कर दिया, ये मिस वैल्यू हो गया 0. अगर मैं वही वैल्यू कंसिडर कर रही हूँ विद द ट्रेन्ड वेट मैट्रिक्स, व्हाट आउटपुट आई एम गेटिंग? -1 1. व्हाट आई वांट? यस, आई वांट द सेम. मुझे -1 1 ही चाहिए था, एंड दैट इज द पावर ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी. Even though some values are missing, यहाँ पे वैल्यू मुझसे मिस हो गई थी, but then also there is a no change in the output. The output I am getting as -1 and +1 only. Is it clear to all? Yes. मैम वेट्स कैलकुलेट करने वाला आप एक बार और पार्ट कर सकते हो हेटेरोजीटी में, वेट मैट्रिक्स. ठीक है, चलेगा. सी, फॉर वेट मैट्रिक्स व्हाट प्रोसेस वी आर फॉलोइंग? सबसे पहले ये सेट ले रहे हो, ठीक है. 1 -1 -1 -1, ये क्या आपका? यस, दिस इज नथिंग बट योर S. 1 -1 -1 -1. ये क्या ले रहे हो आप? ये आउटपुट का वेक्टर ले रहे हो, -1 +1. So T is a vector -1 +1. Is it clear to all? सबको ये क्लियर है? ओके. सो नाउ यू आर फाइंडिंग द वेट करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट इनपुट. मैंने ड्रॉ किया था, वी आर हैविंग 4 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स वी आर हैविंग. ओके, तो फर्स्ट सेट के साथ, फर्स्ट इनपुट सेट के साथ अगर आप कंसिडर करते हो, सो हर एक जगह पे अगर आप कंसिडर करते हो x1 x2 x3 x4, अगर आप ये कंसिडर करते हो तो टोटल 8 वेट्स मुझे फाइंड आउट करने हैं. टोटल 8 वेट्स मुझे यहाँ पे ये फाइंड आउट करने हैं. तो पहले 2 आप निकाल रहे हो विद द फर्स्ट सेट. पहले सेट के साथ पहले 2 वेट्स आप निकाल रहे हो. सो आई एम फाइंडिंग इट बाय S ट्रांसपोज इंटू T. इसका ट्रांसपोज है और T के साथ आप मल्टीप्लीकेशन ले रहे हो. सो आई एम गेटिंग द फर्स्ट वेट मैट्रिक्स. And in similar way, second input 1 1 -1 -1, 1 1 -1 -1, output -1 1, output -1 1. तो आपने सेकेंड वेट निकाल लिया, सेकेंड वेट मैट्रिक्स निकाल लिया यहाँ पे. ठीक है, W2 इट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दिस 2. इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया तो मुझे ये मिल गया. एंड इन नो सिमिलर वे आप थर्ड सेट ऑफ इनपुट ले रहे हो उसके आउटपुट के साथ, फोर्थ सेट ऑफ इनपुट विद देयर आउटपुट, और इस तरीके से मुझे यहाँ पे टोटल जो मैट्रिक्स मिल रहे हैं, दिस इज नथिंग बट W1 X1 W2 X2, इस फॉर्म में मुझे मैट्रिक्स मिल रहे हैं. सो W1 W2 W3 W4 वी आर राइटिंग, एंड एडिशन ऑफ दिस ऑल गिव्स मी द फाइनल वेट मैट्रिक्स. टोटल 8 वेट्स आई विल गेट हियर. टोटल 8 वेट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं. ठीक है, जो हम पहले सेपरेट निकालते थे वही हमने एक साथ ही यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है. दिस इज नथिंग बट द वेट मैट्रिक्स. इज इट क्लियर नाउ? यस, इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम, यस मैम. अब कोई भी एक दूसरा हम एक सेट कंसिडर करते हैं, एंड
आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू। एक कोई भी सेट कंसिडर कर लो, जैसे कि आपने ये थर्ड वाला पेयर, ओके चलो सेकेंड वाला पेयर कंसिडर करते हैं। क्या है? 1 -1 -1 -1, आउटपुट इट इज -1 या ये वाला पेयर कंसिडर कर लो, ठीक है। 1 1 -1 -1, आई एम कंसिडरिंग अ पेयर। एस क्या है? 1 1 -1 -1, ये वाला पेयर 1 1 -1 -1। आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट इट शुड बी -1 1, ये आना चाहिए, ठीक है। तो आउटपुट मुझे ये चाहिए, बट ये इनपुट कंसीडर करने की जगह पे इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग दिस आई एम मेकिंग सम मिस्टेक। नो, मैंने मिस्टेक कर दिया और मैंने जो इनपुट है क्या कंसीडर कर लिया, मुझे एक मिस्टेक कंसीडर करनी है। सो आई एम रिप्लेसिंग दिस 1 बाय -1, ओके। ये मिस्टेक हो गया। मिस्टेक दिखाना है तो -1, मिसिंग दिखाना है तो 0। तो 1 की जगह पे हमने -1 ले लिया। 1 -1 -1। Now what we want to check, if there is a mistake in the input itself, whether I am getting this output or not. This we want to check. So can you do this? Everyone please try. I will explain you the steps. This is nothing but your x now with the mistake. Find out x into w. This is your w. This is your x. Find out the value. This is nothing but I actually. Now find out y by applying activation function on this. यहाँ पे आप activation function लगा रहे हो जिससे आपको आउटपुट मिलेगा। Everyone please try it. मैम Yes. मैम वो जो वेट मैट्रिक्स बना था ना मैम सेकेंड इनपुट के लिए, वो आई गेस गलत हो रहा है मैम फॉर सेकेंड इनपुट। ये वाला वो गलत, हाँ मैम वो गलत हो रहा है मैम प्रोडक्ट के बाद। वो -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 ऐसा कुछ तो आ रहा था मैम। चेक कर रहा था मैम, मतलब सही कौन सा है। Is there any mistake? मैम मेरा तो वही आ रहा है मैम, क्योंकि वो तो वेट मैट्रिक्स भर रहा है ना मैम, वो -1 1 -1 1 1 -1 और 1 -1 ऐसा बन रहा है मैम, एस ट्रांसपोज इनटू टी करके। मैम वो आइडियली यहाँ पे मैट्रिक्स प्रोडक्ट लेंगे तो 1 -1 -1 1 1 1
1 -1 आना चाहिए ना मैम, और यहाँ पे जो हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है वो 1 दे दिया है, और फिर थर्ड रो में वही प्रॉब्लम है मैम, इसलिए मैट्रिक्स पूरा गलत हो गया मैम, मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं ये देख लेती हूँ कि क्या हो रहा है, या कुछ गड़बड़ सच में हो गई है, बट ये प्रॉब्लम का कंसेप्ट समझ में आया है सबको? यस मैम। यस मैम। मैम आप स्टेटमेंट दिखा दो ना मैम, तो हम खुद एक बार ट्राई कर लेंगे मैम, होमवर्क टाइप। ठीक है, ये मैं आज शेयर कर रही हूँ, ये वाला पीपीटी मैं आज शेयर कर रही हूँ। यस मैम, थैंक यू मैम, हो गया। यस, हेट्रो में हमें यही बातें की याद रखनी है कि हमारा इनपुट एंड आउटपुट अलग अलग है, एंड ऑटोमेटिकली इफ यू आर अप्लाइंग द करेक्ट प्रोसेस, जो ऑर्डर है ना वो ऑर्डर मैच हो जाते हैं मैट्रिसेस के। पहले वाले में अगर आप देखो, सो ओनली वन ऑफ द इनपुट वैल्यू इट इज गिवन टू यू, सो एस इट इज गिवन टू यू ओनली, एस ट्रांसपोज, तो इनपुट और आउटपुट दोनों भी सेम है हमारे, सो यू आर टेकिंग एस ट्रांसपोज इनटू एस, एक मैट्रिक्स बना रहे हो, and then the same weight matrix we are using for other trainings, maybe one missing data, two missing data, one mistake data, two mistake data, and so on. See, let me tell you one thing, don't expect that every time the data it will be matched, कि like अगर आप ये वाले प्रॉब्लम में ना टू मिस्टेक वैल्यूज के लिए चेक करते हो, अगर आप टू मिस्टेक के लिए चेक करते हो ना, तो वहां पे ना आपको मैच नहीं मिलेगा। सो नॉट नेसेसरी कि हर बार ये पॉसिबल ही हो, वी आर सीइंग पीस ऑफ डेटा, नॉट मिस, एक पर्टिकुलर डेटा हम कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे टू मिस्टेक के लिए ना ये अप्रोप्रिएट एल्गोरिदम नहीं हो रहा है, तो टू मिस्टेक में आपको ना मैच नहीं होगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि टू मिस्टेक के लिए तो मेरा तो मैच नहीं हो रहा है। फॉर दिस विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन यू कैन डेफिनेटली ट्राई। टुडे ओनली आई विल शेयर द पीपीटी, इसमें ही आप अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके देखो कि लाइक यहाँ पे अगर आप मिसिंग कंसिडर कर रहे हो, ओनली वन मिसिंग इट मे बी हियर, इट मे बी हियर, इट मे बी हियर, इट मे बी हियर, टू मिसिंग भी कंसिडर कर रहे हो तो भी आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस आप कंसिडर कर सकते हो, सो यू कैन ट्राई। एंड इन सिमिलर वे हेट्रो के लिए बस पहला वाला पार्ट डिफिकल्ट जाता है, लेटर ऑन द प्रोसेस इट इज सेम। आई फाइंड आउट करना पहले कि बाय यूजिंग दिस एक्स डब्ल्यू, ये फाइंड आउट करना, और उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द एक्टिवेशन फंक्शन, क्योंकि हमारे जो फाइनल आउटपुट दिए जाएंगे दैट इज इन टर्म्स ऑफ 1 and -1 के फॉर्म में है, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू अप्लाई द एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन हमारे बाइपोलर में है तो हम इस तरीके के यूज करेंगे एक्टिवेशन फंक्शन। अगर बाइनरी में दे दिए है, सो इन दैट केस 0 विल बी नॉट देयर, सिर्फ ये i greater than 0 एंड i less than 0 वाला ही हम कंसिडर करेंगे उस केस में, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर एटो एंड हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी। Tomorrow we will see the concept of not tomorrow, in the next lecture we will see Hopfield network, where we are using the concept of feedback network or that recurrent network. So recurrent network में हमें क्या पता है, that input और output अगर आप consider करते हो, that output gives you input itself, या output ही खुद को एज एन इनपुट कंसिडर करता है। तो सेम थिंग, अगर आपका इमेज ब्लर है, अगर इनपुट में गलती हो गई है, एंड देन in output it retrieving and the correct input it is giving to himself, so that is the concept of Hopfield network. We will see in the next lecture. I will convey you tomorrow. See, instead of sharing that video lectures only, we will try to take one online session to explain the MATLAB for neural network. Today I will share one small book. See, even though it is of 74 pages, it contains number of what we'll say images and all. और अगर आप एक पेज के लिए भी कंसिडर करते हो, मैक्स टू मैक्स इट रिक्वायर्ड 2 to 5 minutes, not more than that. So उस अकॉर्डिंगली वो 74 पेजेस का बुक भी ना आप मिनिमम टाइम में रीड कर पाओगे. So this is request to all the student, please go through that book.
Tomorrow I know that you are having the test and all, but after that also you will be very busy in the next week. So on the Saturday itself we are trying to take one live session. एक आपण live session आपण उद्याच घेऊन टाकणार आहोत. Just to explain that, almost 60 to 70% part of the third unit we can cover in that one session itself. But for that you need the prior knowledge. So I will share that book now itself. Just go through that book. Easy book आहे, तुम्हाला आरामात समजून जाईल सगळे कंटेंट. And you are already familiar with C, त्याच्यामुळे मला नाही वाटत ते डिफिकल्ट जाणार आहे. Okay? You can put your roll number in the chat box. Ma'am. Yes. एक क्वेश्चन होता. बोला. मॅम मिसिंग साठी 0 कन्सिडर करायचंय आणि मिस्टेक साठी -1 कन्सिडर करायचं ना? येस. ओके मॅम. आणि जिथे -1 असेल ना, जिथे -1 असेल तिथे मायनस मायनस बनून तो प्लस होऊन जाईल. म्हणजे तुमचा इनपुट एखादा जर -1 1 1 1 असेल आणि तुम्ही पहिल्याच एलिमेंटला मिस्टेक कन्सिडर करतायत, तर तो -1 ने रिप्लेस झाल्यामुळे तिथे +1 होऊन जाईल. मैम बस फ्लिप कर देना ना मैम उसे, मतलब यस वन का माइनस और माइनस देना है. यस माइनस साइन आपको ऐड कर देना है संजय. ओके, सो आई हैव आल्सो डाउनलोडेड द अटेंडेंस, सो आई थिंक लेट अस कंक्लूड हियर. मैम मंडे को आई मैटलैब पे ही होगा ना? संजित मैं मंडे को नहीं आई रखूंगी. मंडे को जो लेक्चर रहेगा ना, I am trying that today and tomorrow I can give you maximum notes. One of my point it is remaining half-filled network, so I will complete that one point on the Monday itself. Okay? और तब तक ना यूनिट 1 और 2 के सारे कलेक्टिवली नोट्स विद द सॉल्व्ड एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगी. सो एक आपके पास ना कलेक्टिवली प्रॉब्लम एंड थ्योरी के नोट्स भी रहेंगे. We will take a one lecture as a revision lecture कि सारे concept हम फटाफट revise कर लेंगे, and then in the last lecture most probably, or if it is possible to find out the time before Friday itself, I will find out that time and I will take your small test. I will repeat again. आई जो होगा ना, देखो अगर हम पूरा वेटेज असाइनमेंट को देते हैं ऑनलाइन प्रोग्रामिंग, we know that many of the time you can get that code, ready-made code. So everyone will get 20 out of 20 for internal evaluation, which is not at all expected. ठीक है, तो इसलिए हम ना हमारे टेस्ट को भी उसके साथ साइमल्टेनियसली वेटेज दे रहे हैं. एंड प्लीज टेक दिस टेस्ट वेरी पॉजिटिवली बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि पहले भी हमने देखा था कि बहुत से मिस्टेक्स हो रहे थे. आप पॉइंट भी एडिशनल हो गए, इन प्रीवियस यूनिट बैक प्रोपोगेशन वाज नॉट देयर, तो हम सारे पॉइंट्स ऐड करके यूनिट 1 एंड 2 के एक छोटा सा टेस्ट भी लेंगे और एक असाइनमेंट भी हम लेंगे. असाइनमेंट सी वंस यू अंडरस्टैंड इट इज अ वर्क ऑफ 1 क्लिक ओनली. डेटा ओनली यू आर टेकिंग और उस पे आपको 1 क्लिक पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. तो assignment completion, it is work of hardly few minutes, not more than that. It is not like your other assignments कि जिसमें आपको लिखना है, बहुत कुछ करना है. तो वो assignment का format बहुत ही easy रहेगा. So don't take tension for that. और जो एक quiz रहेगा, our purpose it is same कि आप revise कर लो, because we know that always एक जो लिमिट होता है, जब तक हमें पता नहीं होता है कि एग्जाम है तब तक हम नहीं पढ़ते, हम तब तक लिख के भी नहीं देखते. Until and unless you are getting that environment, you are not going to understand. Are you able to write down or not? And that's why I will take a small test also. But after providing all the notes and taking a small revision, maybe it is most probably on next Friday. Okay? और साइमल्टेनियसली एक असाइनमेंट भी होगा जो कि कुछ मिनट का वर्क रहेगा बस. मैम क्योंकि मैम आपका लेक्चर मंडे, थर्सडे और फ्राइडे है और थर्सडे को हॉलीडे है, ऐसे बोल रहे थे. आई गेस थर्सडे को कौन सा हॉलीडे है? कौन सा हॉलीडे है थर्सडे को? 14th है ना मैम, आई गेस बाबा अंबेडकर जयंती है और oh my god, let me check that. Then also if all are ready, I will take that online lecture on one day only instead of 2 days. आप भी holidays enjoy करोगे. I don't think are you enjoying that holidays or not, because from 18 maybe you are empty, it will start. तो हम instead of 2 days I will take that one day only lecture, online lecture लेंगे हम. Let me talk with your academic coordinator कि उनका प्लानिंग क्या है, उस अकॉर्डिंगली मैं बात कर लेती हूँ. उसके पहले मैं टाइम फाइंड आउट कर लेती हूँ. ठीक है? But on Yes, ma'am. Monday confirm date I will tell you.
बी प्रिपेयर्ड, नेक्स्ट वीक में हमारा टेस्ट होगा ही, छोटा सा ही टेस्ट रहेगा, लास्ट टाइम जैसे ही 2 क्वेश्चंस का ही टेस्ट रहेगा, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड, आई विल टेक दैट टेस्ट.